Very good morning, 7th class. We are covering DG for your history book, chapter number 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. ठीक है, जो है नोमैड्स की लाइफ के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. ट्राइबल सोसाइटीज इन मुगल एरा को हम देख चुके हैं. आज की क्लास में हम करेंगे सोशल चेंजेस अराइजिंग ट्राइबल्स, इमर्जेंस ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, कि सोशल चेंजेस ट्राइबल लोगों के बीच में क्या क्या आए और इमरजेंस ऑफ स्टेट्स का निर्माण जो है किस तरीके से हुआ, अलग अलग स्टेट्स जो है किस तरीके से बनी. तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपने डीजी को और देखते हैं क्या क्या सोशल चेंजेस ट्राइबल लोगों के जीवन में आए समय के साथ साथ. The tribes in India lived by their own rules in an equal society. Do you know what an egalitarian society means? Egalitarian society क्या होती है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम. However, during the Mughal era, this equal society started drifting towards the unequal social hierarchy of the Hindu society. Why did this happen? Let's take a look into the lives of the Gond and Ahom tribes to find out. इनिशियली देखो क्या हुआ था स्टूडेंट्स. जो सोसाइटी थी उसमें सब लोग बराबर थे. ठीक है, कोई भी ऊंच नीच का या फिर छोटे बड़े का, अमीर गरीब का कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था लोगों के बीच में. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्राह्मणों के बनाए हुए जो कैटेगरीज थी धीरे धीरे समाज उनमें बढ़ता चला गया. ठीक है, तो वो चीज कैसे हुई उनको हम समझते हैं. The Gonds lived in a large forested region called Gondwana. गोंड्स लोग कहाँ रहते थे? एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में जिसका नाम था गोंडवाना. Gondwana was spread across central India and comprised of many Gond kingdoms. These kingdoms were set in parts of the present-day Vidarbha region of Maharashtra, parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, and Orissa. During the Mughal era, Gondwana and its people experienced two prominent changes. One was the administrative division of the Gond kingdoms, and the second was a social change among its people. First, let's look at how the Gond kingdoms were administratively divided. To do this, we will have to enter the Gond kingdom of Garha Katanga, comprising of 70,000 villages. For better administration, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स क्लास में भी, गरहा कटंगा में क्या थे, 70,000 गांव का एक पूरा का पूरा ग्रुप था. ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन था इसका, उसको हम समझ रहे हैं. the large kingdom was divided into smaller gars. Each gar had its own Raja. The gars were further divided into chaurasis of 84 villages each. ठीक है, ये जो ग्रह था इसको 84 में और बांटा गया था, यानी कि जिसपे 84 और छोटे छोटे एरियाज थे इस तरीके से. And finally, each chaurasi was divided into baroks of 12 villages each. ठीक है, और इसके अंदर 12 गांव होते थे एक 84 के अंदर. Now, let's look at the social change experienced by the people of Gondwana. The Gonds, who lived in an equal society, started drifting towards the unequal social classes of the caste-based society. This drift was due to the emergence of large states
across Gondwana. The Brahmin influence in the area now increased, and they started collecting land grants from the Gond Rajas. The Gond Rajas now expressed a desire to enter the caste-based system as Rajputs. Aman Das, the Gond Raja of Garha Katanga, fulfilled this desire by assuming देखो हमने देखा था ना कि कुछ जो आदिवासी लोग थे वो खुद को राजपूत जो है राजपूत की कैटेगरी में खुद को लाना चाहते थे. ठीक है, तो अमन दास ने इस चीज को जो है फुलफिल किया. the title of Sangram Shah. In 1565, during the rule of Rani Durgavati, the Mughals attacked Garha Katanga, causing its downfall. In your opinion, देखो गरहा कटंगा एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन क्या होता है मुगल इस पे अटैक करते हैं और इसकी पावर फिर धीरे धीरे खत्म होती जाती है और ये मुगल्स के कंट्रोल में चला जाता है. was this change in the social setup of the tribal group progressive or not? प्रोग्रेसिव मतलब क्या ये जो सोशल चेंजेस आया था कि ये लोग भी जो है सेटल कम्युनिटीज में अपने आप को बांटने लगे थे. ये जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था इसमें खुद को एंटर करने लगे थे. तो यह प्रोग्रेसिव था या नहीं था? प्रोग्रेसिव मतलब उनके लिए आगे बढ़ने वाला था या नहीं था? चैप्टर पढ़ा है आपने, राइट? During the 13th century, the Ahom tribe traveled from Myanmar to the Brahmaputra Valley. ठीक है स्टूडेंट्स, अहोम जो ट्राइबल ग्रुप है वो म्यांमार से आया था ब्रह्मपुत्रा वैली में यहाँ पे. ठीक है, where they created a new state of their own. The society was divided into clans or khels. अहोम सोसाइटी किसमें बटी हुई होती थी? छोटे छोटे क्लेन्स में, जिनको खेल्स बोला जाता था. Each khel controlling a group of villages. This state of Ahom depended on forced labor, and the people forced to work for the state were called pikes. पाइक्स कौन होते थे? ऐसे लोग जिनसे जबरदस्ती सरकार जो है काम करवाती थी. ठीक है, इनको जो है बोला जाता था कि आपको सरकार स्टेट यानी कि सरकार के लिए जो भी यहाँ का जो है स्टेट थी इसके लिए काम करना होगा. इन लोगों को बोला जाता था पाइक्स. To maintain a balance among the pikes in each clan, a census was taken. सेंसस क्या होता है? जनगणना. Pikes from the more populated clans were then shifted to the lesser populated ones, thus breaking up the clans. क्या कर रहे थे ये लोग? जिस क्लैन की जो है पॉपुलेशन कम होती थी वहां पे इन फोर्स लेबर्स को भेजने के लिए भेज दिया जाता था. ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्यादा है इनकी संख्या और यहाँ पे कम है तो सेंसस यानी कि जनसंख्या की जो है जनगणना की जाती थी. उसके बाद पता लगाया जाता था कौन से एरिया में जो है लोगों की संख्या कम है और कौन से एरिया में ज्यादा है. तो ज्यादा वाले जगह से लोगों को उठा के कम वाली जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था और इस तरीके से इनका जो क्लैन था यानी कि इनके जो फैमिलीज के ग्रुप थे वो टूटते जा रहे थे. For the Ahoms, who always worshipped their own tribal gods, the introduction of Hinduism was another cause for social changes in their society. पहले क्या था, अहोम अपने ही ट्राइबल भगवान को मानते थे. फिर जब ये हिंदुइज्म में आए, हिंदुइज्म से इनका इंट्रोडक्शन हुआ तो हिंदू देवी देवताओं से भी इनका जो है परिचय हुआ और कुछ सोशल चेंजेस इनकी लाइफ में आए. The Ahoms were introduced to Hinduism during the 16th century, when King Suhumung annexed the kingdoms of the Chutia and Kochhajo. He was the first king to adopt a Hindu name, Swargnarayan.
Hinduism in the Ahom society, however, became predominant during the 17th century under the reign of Sid Singh. The Brahmins and temples then became influential and were given land grants by the king. देखो क्या था, सबसे पहले जो है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ये जो आदिवासी लोग थे, ये लोग कन्वर्ट होके हिंदू धर्म को मानने लगे थे। तो उससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे, जो मंदिर थे, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज्यादा प्रभावशाली होने लगे। तो राजा क्या करते थे, इन ब्राह्मणों को, मंदिरों को जो है लैंड ग्रांट में देते थे। Although Hinduism was now predominant in the Ahom society, traditional beliefs were still followed by the kings. What was the Rajput name adopted by Gond Raja of Garha Katanga? क्या गौंड राजा का ने अपना नाम बदल के कौन से, मतलब राजपूत नाम क्या रखा अपना? संग्राम शाह। ठीक है। इन गरहा कटंगा व्हाट डिड 84 विलेजेस ऑफ अ गरहा फॉर्म? 84 गांव मिलके क्या बनाते थे गरहा फॉर्म? जो गरहा के 84 विलेजेस थे, वो गरहा कटंगा में क्या बनाते थे? क्या बोलते थे हम उनको? 84। अंडर द रेन ऑफ विच अहोम किंग डिड हिंदुइज्म बिकेम प्रीडोमिनेंट इन द अहोम सोसाइटी? अभी अभी पढ़ा हमने। कौन सा जो अहोम राजा था जिसके राज में, जिसके जो है शासन काल में हिंदुइज्म जो है एक मेन धर्म बना समाज का, उसका नाम था शिव सिंह। व्हाट हिंदू नेम डिड द अहोम किंग सुहुंग मुंग अडॉप्टेड? सुहुंग मुंग जो राजा था अहोम का, उसने कौन सा हिंदू नाम अपना रखा था? स्वर्ग नारायण। ठीक है। अब वर्णा से जाति में क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। चेंजिंग सोसाइटी फ्रॉम वर्णा टू जाति, द वर्णा सिस्टम। How do people choose their professions? Based on birth or educational qualifications? देखो, लोग अपना प्रोफेशन कैसे चुनते हैं? जहां वो पैदा हुए उस हिसाब से, या जो उनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से? आपको क्या लगता है लोग अपना प्रोफेशन कैसे चुनते हैं? आज के समय में तो आपको पता ही है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, जो आप पढ़ाई करते हैं, उसके बेसिस पे आगे चल के आप अपना प्रोफेशन चुनेंगे। ठीक है। जैसे आप डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे तो इंजीनियर बनेंगे। लेकिन पहले के टाइम में क्या ऐसा होता था? पहले के टाइम में क्या होता था, आपके जन्म के हिसाब से आपका प्रोफेशन तय होता था, ना कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। Can you imagine living in a world where your profession is determined at your very birth? Impossible, isn't it? Hundreds of years ago, the Hindu society in India was a world just like this. It was a caste-based society. देखो क्या था, सदियों पहले इंडिया में ऐसा ही समाज था जहां जन्म के साथ ही किसी भी पर्सन का जो है ऑक्यूपेशन डिसाइड कर दिया जाता था कि वो बड़ा होके क्या काम करेगा। ठीक है। Divided according to the rigid social structure in the Vedic scriptures. Let's take a closer look at this social structure and its effect on the Indian society. According to the Vedic scriptures, Purush, the primeval giant, was sacrificed by the gods to create the universe. From his head were born the Brahmins. The teachers and priests
who had the highest social standing in society. अब इसको ध्यान से समझना है आपने, जो हमारे मतलब ये जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, इनके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। Structure and its effect on the Indian society. According to the Vedic scriptures, पुरुष, जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है, मतलब हमारे वेदों में जो लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ण है, कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है, ये किस तरीके से शुरू हुआ। वो the primeval giant, was sacrificed by the gods to create the universe. From his head were born the Brahmins. The teachers and priests who had the highest social standing in society. From his arms came the Kshatriyas. The rulers and warriors of society. His thighs gave birth to the Vaishyas, a group formed by the merchants and landowners of society. And from his feet emerged the Shudras. The laborers and peasants who performed hard manual labor. तो देखा आपने, ये जो वेदों के अनुसार जो है, किस तरीके से कास्ट बेस्ड जो है सोसाइटी का जन्म हुआ। ये जो पुरुषा थे, इनके सिर से, हेड से जो है ब्राह्मणों का जन्म हुआ, तो इनको सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद इनके जो आर्म्स थे, वहां से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जो कि आगे चल के क्या बनते थे, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे और राजा बनते थे। इनकी जो थाइस थी, वहां से वैश्यास का जन्म हुआ, जो कि मर्चेंट्स और मनी लैंडर्स का, लैंडलॉर्ड्स का जो है ग्रुप बना। और इनके पैरों से शूद्रास का जन्म हुआ, जो कि जिनको सबका जो सोसाइटी में सबसे नीचे रखा जाता था, जो उनसे लेबरर का काम करवाया जाता था। These four classes are defined as the Varnas, in accordance with which the Indian society was divided. ठीक है, इनको ही वर्णा कहा जाता है। The Varna one belonged to was determined at birth and was unchangeable. तो जो वर्णा के जो काम होते थे, वो उनके बर्थ से ही डिसाइड हो जाते थे कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आप युद्ध में ही भाग लोगे, सैनिक बनोगे, राजा बनोगे। ब्राह्मण हो तो आप जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम करोगे। ठीक है, तो मतलब इनके जन्म के साथ ही इनके ऑक्यूपेशन भी डिसाइड हो जाते थे, जिनको कि बदला नहीं जा सकता था। Belonging to a Varna were not permitted to marry or socialize outside the Varna. The introduction of new skills and occupations brought about a further division of society. Based on specific occupations, each Varna was divided into smaller groups called Japis. इन वर्णों को भी जो है इन्हीं के ग्रुप्स में छोटे अलग अलग भागों में बांट दिया जाता था, जिनको जातिस कहा जाता था। Do you know what jati means? A jati is a community or sub-community related to an occupation. Before the existence of jatis, all these people performing hard labor were called Shudras. However, with the introduction of jatis, each of them were recognized by their jati and not their varna. ठीक है, जब इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, तो इनको अलग अलग जो है इनकी जाति के नाम से फिर जाना जाने लगा। जैसे कि ब्राह्मणों के दो ग्रुप बन गए, एक हो गए टीचर, एक हो गए पुजारी। क्षत्रियों के दो ग्रुप बन गए, एक हो गए किंग्स, दूसरे हो गए वॉरियर्स। और इनके भी जो है दो ग्रुप हो गए, एक बन गए लैंड ऑनर्स, एक मर्चेंट्स। लास्ट वाले ग्रुप के भी चार या तीन भाग हो गए, एक पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ लोहार,
फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो फिर इनको इन्हीं नामों से जाना जाता रहा। These people, however, did not have the liberty to choose their jati. Neither did they have the liberty to socialize or marry outside their jati. This division of society based on the varnas and jatis did not affect all of society. ठीक है, Tribal पढ़ा था ना चैप्टर में भी कि ट्राइबल लोग जो थे वो इस जाति सिस्टम को नहीं मानते थे, यानी कि पूरी सोसाइटी में इस तरीके का सिस्टम नहीं चलता था। for example, did not live by the rules of the varna system. Unlike caste-based society, members of a tribe lived in unison, following their unique customs and traditions. Some tribes, however, wanted to enter caste-based society and gain recognition as Kshatriyas. Many new clans which had their lineage from the Hunas, the Chalukyas, the Chandelas, and other tribes now came to be regarded as rulers. Further, support from the Brahmins helped in the inclusion of many tribes in the caste-based system. ब्राह्मणों की मदद से जो ये ट्राइबल लोग थे धीरे धीरे फिर इन ग्रुप्स में, सोसाइटी के इन ग्रुप्स में आने लगे। However, the privilege of joining the ruling classes was only enjoyed by leading tribal families. ठीक है, यानी कि ऊंची जाति में आने का अधिकार सिर्फ जो है रूलर के जो फैमिलीज होती थी उन्हीं को होता था। The other tribes were forced to join the lower jatis of the system. ठीक है, to which varna did the merchants and landowners of the society belong? अभी देखा हमने वैश्यास। Due to the introduction of new occupations, what were the varnas further divided into? varnas को जो है कि उनके occupation के basis पे किन जो है division में बांटा गया? jatis, ठीक है। What were the slaves and laborers called? क्या बोलते हैं हम इनको? शूद्रास। Who caused the tribes to turn towards caste-based society? कौन मदद करता था, कौन कारण बनता था कि जो ट्राइबल लोग हैं वो caste-based सोसाइटी में आ जाएं? राजपूत, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो है डीजीबी इस चैप्टर की कंप्लीट होती है, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर? यहाँ तक इसको आप अच्छे से स्टडी करके आएंगे।